Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, today your class or Yesterday chart work was supposed to be today? बेटा सर का अभी मैसेज आया था. He is not able to take the class, so today will be navigation. Okay. Okay. So how are we doing today? So just yours 5 minutes, sir. In navigation की notebook निकाल देता. निकाल लो बेटा, निकाल लो. प्लॉटिंग असाइनमेंट कंप्लीट हो गई बेटा? ओके. बेटा प्लॉटिंग में और चार्ट वर्क में दोनों में आपके आंसर जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, बिकॉज उनमें टूल्स की एरर आएगी, प्लॉटिंग टूल्स की एरर आएगी. सो लिटिल बिट डिफरेंस इन द आंसर्स, डोंट वरी एट ऑल. मेन थिंग इज दैट यू आर 11th क्वेश्चन क्या है बेटा? जस्ट रीड इट आउट. सर ये बैक एंगल वाला भी थोड़ा गलत लग रहा है. ओके, आंसर शुड बी क्लोज. बेटा एनीबडी एल्स हैविंग इश्यूज इन नंबर 11? सर अभी पहुंचे नहीं 11 तक. ओके ओके ओके, ऑल राइट. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. एक बार प्लॉटिंग दोबारा रीचेक करना. यू हैव द सोल्यूशन विद यू, जस्ट रीचेक एंड सी. ओके, सो मैच इट विद. अब उसमें दो पोजीशन सर्कल हैं बेटा, हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन. ओके, अब बेटा उस क्वेश्चन में जो आपका स्केल है ना, आई थिंक इट्स 1:5, तो उसकी वजह से एरर भी ज़्यादा आएगी बेटा. सर मैंने अपना सोल्यूशन शेयर किया है ग्रुप में, अगर वो भाई देख लियो एक बारी. ग्रेट बेटा. पीयूष, जस्ट चेक अंकित सोल्यूशन. ओके, और क्या डाउट्स आ रहे हैं बेटा? सर एक क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने शेयर किया था, उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो दो पार्ट में है, एक मून का है और एक प्लैनेट का है, तो उसमें डेटा जब कॉस पी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का क्यों ले रहे थे, और तो आपने बोला था क्लास में बताएंगे. ओके बेटा, अभी लेट मी ओपन अप द असाइनमेंट. सर एंड देन 9th क्वेश्चन आल्सो सर. सर वो कॉस्ट हैक का आ रहा है सर, वो भी. सर एक बार इसके 13 के बाद 9th का समझा देना सर. 9th क्वेश्चन. ओके बेटा, ऑल राइट, लेट मी ओपन अप. ओके, तो सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो है नंबर 9. सीरियल ऑर्डर में चलते हैं. नंबर 9 आ रहा है पहले. हाँ यस ठीक है. ओके, नंबर 9 देखते हैं. लेट मी ओपन अप द असाइनमेंट. Okay, number 9.
ओके, नंबर 9 में ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ऑल राइट बेटा। तो रुको, पहले ये नंबर 9 को क्लियर करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई नंबर 9। ये मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये बेसिकली, गिव मी अ मिनट। So I'm explaining you number 9 now. Pay attention. The question says, a morning sight of the sun at 0850 ship's time on 1st September 1992 using DR latitude 26 degrees 20 minutes south gave an observed longitude of 165 degrees 06 minutes east. Using the estimated speed of 18 knots on a course of 120 degrees true, calculate the ship's time for sun's meridian passage and the sextant altitude to be set for observation of the lower limb of sun at the meridian passage. Go ahead, beta. Go ahead. Shall I continue? Okay, continuing beta. It is given in the question that ship's time is equal to GMT plus 11 hours. Height of eye 18 meters, index error is given as 2 minutes off. Now all these type of questions where ship's time of sun's meridian passage or the meridian passage time of a body is asked, a very simple and easy method to do these type of questions is to make a diagram looking from top of the North Pole, put in the relative speeds of the observer as well as the sun, and then find the time easily. So let us use that method here. Let us make a diagram of the Earth looking from top of the North Pole. You can see the North Pole coming in the diagram. We have the diagram of the Earth. North Pole is in the center. We are looking at the Earth exactly from top of the North Pole. This represents the Greenwich meridian. The dotted line which you see represents the Greenwich meridian. Now, when we look from top of the North Pole, the clockwise direction is the westerly direction. So if you are moving in the clockwise direction, you are moving in the westerly direction, and moving anti-clockwise, we are moving in the easterly direction. Now we know the ship's time is 0850 on 1st September 1992 and ship's time is GMT plus 11. So this ship's time minus 11 hours gives us the GMT of the observation, and we get the GMT as 31st of August, 21 hours, 50 minutes and 00 seconds. Now for this GMT, we can easily obtain the GHA of the sun from the almanac, and it comes out to be 147 degrees 28.9 minutes. Let us show this GHA in the diagram. GHA is measured from the Greenwich meridian in the westerly direction. So you can see this GHA from the Greenwich meridian in the westerly direction. When we cover an angle of 147.28.9, this is where the sun is. So we have the sun in our diagram now. Now the longitude of the observer is also given to us in the question. It is 165 degrees 06 minutes east. So from the Greenwich meridian, if I move in the easterly direction by an amount of 165 degrees 06 minutes, this is where the observer is. So we can see the observer's meridian as well as the observer shown in the diagram. Now we can easily see that the angle between the sun and the observer, the green color angle in the diagram,
This particular angle, this is also known as R angle, this is angle at the pole, is equal to 47 degrees 25.1 minute. The total angle is 360 minus the GHA, which is 147.28.9, minus the longitude, which is 165.06, gives us this angle between the observer and the sun. This is 47 degrees 25.1 minutes. Now the observer is moving on a course of 120 degrees true. This is south 60 degrees east quadrantal course. If we consider a distance being covered in 1 hour, the observer is moving at a speed of 18 knots. So he will be covering a distance of 18 miles. Now using plain sailing, we can calculate the departure covered by the observer in 1 hour. That will be distance sine course. Distance is 18 miles. Sine of course, which is 60 degrees, gives us a departure of 15.6 minutes east. In 1 hour, the observer will be covering this much of departure, 15.6 minutes in the easterly direction. Why easterly direction? Because the course which they are steering is having a easterly component. We can now convert this departure into d long. D long is given by departure upon cos of m lat. So the departure, which is 15.6 divided by cos of latitude, without much loss of accuracy, without an appreciable loss of accuracy, we can use our initial latitude itself in this formula. So 15.6 minutes divided by cos of 26 degree 20 minutes gives us a value of 00 degrees 17.4 minutes east. Excuse me, sir. Bolo beta. Sir, can we use now, sir, DLAT for finding the final lat, then we'll use the main lat, or we directly use the DR? बेटा आप अगर चाहो तो आप इसमें मेरिडियन पैसेज का लैटिट्यूड और मीन लैट भी निकाल सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप इनिशियल लैटिट्यूड को भी अगर यूज कर लोगे, यू वोंट हैव एनी एरर कमिंग इन. यू आर टेकिंग कॉस ऑफ द लैटिट्यूड, सो a little bit of difference in the latitude is not going to give you an error in the D long. Okay, sir. बाकी अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो, then certainly yes, you can. You can assume that the Marpas is happening close to 1200 hours and there is about 3 hours 10 minutes of sailing. So you can find out the mean latitude after, let us say, about 1.5 hours, and you can use that here. Okay, sir. I'm asking for the examination point of view, sir. कि marks वगैरह तो नहीं काटेंगे इसके लिए? बिल्कुल नहीं काटेंगे बेटा. ठीक है सर. Okay, because अगर आप उसे भी mean lat यहाँ पे use करते हो, it will again increase the solving time, the calculation time. Okay. Yes, sir. So that's perfectly fine if you use the initial latitude also. और कोई doubt बेटा अभी तक? Okay, great. Let's move ahead. This is the D long being covered by the observer in 1 hour, 17.4 minutes in the easterly direction. Now let's show this in the diagram. You can see the observer is moving in the easterly direction. The arrow shows the anti-clockwise direction here, representing easterly direction, and he is moving at a rate of 0 degrees 17.4 minutes per hour. Also, we are aware that the sun moves or covers the D long at a speed of 15 degrees west per hour. Sun moves in the westerly direction, which is the clockwise direction in this diagram, and it moves by or covering a D long of 15 degrees per hour. So this is also shown in the diagram. The sun is moving westerly with a rate of 15 degrees per hour. Observer is moving easterly with a rate of 17.4 minutes per hour. Since both of them are moving towards each other, the relative speed between the sun and observer is 15 degrees
plus 17.4 minutes, giving us a speed of 15 degrees 17.4 minutes. Now at the time of meridian passage, both the sun and the observer will be on the same meridian, or in other words, you can say that they will meet in this diagram somewhere on the same meridian. So they have to cover a total angle of 47 degrees 25.1 minutes. The relative speed between them is 15 degrees 17.4 minutes per hour. So the time which they will take to meet, or the time to meridian passage, will be the angle which they are going to cover, 47.25.1, divided by the relative speed or the relative rate of coverage of T long, which is 15 degrees 17.4 minutes. This gives us a time of 3 hours, 6 minutes and 5 seconds. If we add this time to the time of the morning side, we will get the time of the meridian passage. So ship's time of meridian passage is 0850, which was the morning side, plus 3 hours, 6 minutes and 5 seconds, which is the time these are going to take to meet or till Marpas, and it gives a time of 11 hours, 56 minutes and 05 seconds. Have a good look, beta. Let me know your doubts coming in. सर मरपास का टाइमिंग थोड़ा समझाइए सर, वो समझ नहीं आया। बेटा कौन से स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है? सर रिलेटिव स्पीड तक समझ में आ गया सर, दोनों को जो ऐड कर रहे हैं ना वहां तक समझ में आ गया। ओके, ऑल राइट। अब बेटा जो मेरिडियन पैसेज है उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन पैसेज? द बॉडी इज ऑन योर मेरिडियन, राइट? यस सर। दैट मीन योर मेरिडियन एंड बॉडीज मेरिडियन आर द सेम? यस सर। That means when the sun and observer they come on the same meridian, that is when Marpas would occur. Yes sir, but sun का सिर्फ पूछा ना सर, इसमें observer का बेटा जब सन और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो किसी पॉइंट पे आके दोनों मिलेंगे ना। अच्छा, ओके 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 ओके, वहीं पर होगा ना मेरिडियन पैसेज बेटा। Okay, okay, okay. Okay, so they will be covering a total angle of 47.25.1 with a speed of 15 degrees 17.4. Okay, so that is what we have calculated. The time is 3 hours, 6 minutes and 5 seconds. Okay, beta, clear? Yes, sir. Okay, all right. Let me show you the second part also. Let's now see the computation of altitude. Since we know the time to meridian passage, we can now easily calculate the distance covered till Marpas. Speed is 18 knots. The time is 3 hours, 6 minutes and 5 seconds as we have just now calculated. This gives us a total distance of 55.8 miles. Now we can find out the DLAT covered by the ship using plain sailing. DLAT is equal to distance cos course. 55.8 cos of course, which is 60, gives us a DLAT of 27.9 minutes south. So if we apply this DLAT to our initial DR latitude, we get the meridian passage latitude as 26 degrees 47.9 minutes south. This is what we will be using to compute the altitude of the body. Also, for this time, we can obtain the declination of the sun at the time of meridian passage from the almanac, and it comes out to be 8 degrees 15.3 minutes north. Now we start with the meridian passage latitude. We write it at the bottom here. Meridian passage latitude is equal to 26 degrees 47.9 minutes south, and we go in reverse. Normally when we do the altitude correction, we start from the sextant altitude and come down to the meridian passage latitude in a Marpas observation.
But now we will be doing reverse. Using this meridian passage latitude, we will be finding out what would be the sextant altitude. Now we know the declination of the sun is 8 degrees 15.3 minutes north. Now to obtain a latitude of 2647.9 south, the MZD has to be 35 degrees 3.2 minutes south. So you can see if MZD is this value, 35 degrees 3.2 south, declination is 8 degrees 15.3 north, their resultant is going to be 26 degrees 47.9 minutes south. Now 90 minus MZD gives us the true altitude, which comes out to be 54 degrees 56.8 minutes. Now we apply the total correction. It is the lower limb of the sun. So the total correction is plus 0 degrees 15.3 minutes. When we go upwards, we will be subtracting this value. So we get an apparent altitude of 54 degrees 41.5 minutes. Now we see the dip correction for 18 meters. It is minus 7.5 minutes. The index error, which is off the arc, is plus 0.02 minutes. And when we apply this dip correction and index error in reverse, that means 7.5 minutes will be added. Index error 2 minutes will be subtracted. We obtain the sextant altitude as 54 degrees 47 minutes. So this computed altitude is used to set the sextant before the sight so that we are ready to take the observation. And this computed sextant altitude is calculated on the basis of our DR latitude at the time of meridian passage. Any doubts coming up here, beta? सर जो डेक्लिनेशन है सर, Right. सर ये जीएमटी पे लिया ना हमने, जब हमने जीएमटी निकाला 31st को. That's right, beta. That's right. Okay sir. सर बट आप कह रहे थे सर वो तो डेक्लिनेशन 8:50 उसके का मेरिडियन पैसेज टाइमिंग का है। सर, लेकिन डेक्लिनेशन जो लेंगे ये तो 3 घंटा 6 मिनट 5 सेकंड ऐड करके लेंगे ना। एग्जैक्टली बेटा, हमने एग्जैक्ट टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज निकाल लिया है ना, तो विद दैट टाइम वी एंटर इनटू द एल्मनैक एंड फाइंड आउट द डेक्लिनेशन. दिस इज द डेक्लिनेशन एट द टाइम ऑफ मेरिडियन. सर तो पीछे वाली बेटा स्लाइड करेंगे, एक बार पीछे वाली वो ये लो स्लाइड बेटा, खोलेंगे। आपने लोकल टाइम निकाला है ना, हाँ हाँ जी, तो इसको जीएमटी में चेंज, 11:56. तो यहाँ दे रखा है ना बेटा, शिप्स टाइम इज जीएमटी प्लस 11. तो अब इसको -11 करके फिर जीएमटी आ जाएगा इसमें, राइट सर? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली. और फिर उस टाइम के लिए 005605 के लिए हम वो ले लेंगे अपना डेक्लिनेशन. एग्जैक्टली, दैट्स राइट. ठीक है सर. सर ये टिपिकल क्वेश्चंस के जरिए थोड़े स्लाइड्स दिखाएंगे सर, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए. बेटा तुम पहले ना ये देख लो, मैं वो टिपिकल पे भी जाऊंगा बट लिटिल लेटर. ओके, तो मैं ये क्लियर हो गया. मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब स्क्रीनशॉट लेना था बाद में सर, अभी नहीं. आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी. ओके ओके सर, आई हैव अ डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 8 सर. बेटा ये वाला क्लियर है? हाँ जी सर. वेरी गुड. आई एम क्लोजिंग दिस डाउन नाउ. सर वन मोमेंट. You want to go back to the question? No sir, I just wanted to ask you, ये जो GP हमने निकाला है इसका सन का initially starting में, तो sir that was true in the case when there was high altitude observation, ना? एक मिनट बेटा, you are talking of question number 10? 9 sir. Number 9. Okay, जो अभी डिस्कस किया. Okay, just a minute. एक मिनट बेटा, I'll show you the slide. हाँ बोलो बेटा. So sir इसमें GP of the sun निकाला है हमने बेटा GP नहीं निकाला है, सिर्फ GHA ही निकाला था शुरू में तो. हाँ जी.
राइट? तो सर वो जीपी निकालने की जरूरत नहीं है क्या इस चीज में? नो, वी डोंट नीड जीपी. व्हाई वी नीड जीपी? ओके, मॉर्निंग में तो हमने डेक्लिनेशन निकाला ही नहीं है. वी डोंट नीड इट. हाँ जी, वो मेरा एक एक्स्ट्रा, सॉरी सर. ओके ओके, क्लियर बेटा? सर डन. नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे प्लीज? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सर नेक्स्ट स्लाइड. ये रही बेटा. क्लियर बेटा? डन. Yes, sir. Thank you. Okay, all right. So I'm closing this down now. Okay, so this was question number 9. अब बेटा नंबर 9 के बाद आप मुझे नेक्स्ट डाउट बताओ. तो क्वेश्चन 8 में एक डाउट है सर. 13. अब 8 पे जाना बेटा. हाँ जी सर. 8 में बैक एंगल में सिर्फ वो डिप का करेक्शन जो है, सॉरी टोटल करेक्शन जो है वो लोअर लिम. Actually the value is coming for lower limb it is minus, actually it is plus 15.5, बट जब बैक एंगल लेते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं. बट इसमें 16.6 है जो अपर लिम का वैल्यू है. ओके बेटा. यस सर, ये मेरे में यही आया था. ओके ओके ओके, होल्ड ऑन. जो हमें सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड दिया गया है वो लोअर लिम्ब का है, राइट? हाँ जी सर. यस सर. जब हम इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 तो हमारा लिम्ब चेंज होता है बेटा? हाँ सर. हाँ सर. लोअर अपर हो जाता है. Exactly. So when we subtracted from 180, the limb changes. So once you have subtracted it, this becomes a upper limb altitude now. 60 to 57.3 is upper limb altitude now, beta. Okay. यहाँ पे he should have written upper limb. Okay. So this we will be applying for the upper limb. That is why a negative correction. सर इसमें जो सुब्रा के बुक में देखा था उसमें डॉन ड्रॉप स्पेयर पार्ट्स करके दिया हुआ है. उसमें डिप रिफ्रैक्शन सेमी डायमीटर अलग से निकाला है. तो डायरेक्ट टोटल करेक्शन निकालना है कि अलग अलग करके निकालना? बेटा अगर आप वैसे करना चाहते हो यू कैन डू दैट, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग द टोटल करेक्शन. इट इज परफेक्टली ऑल राइट. ओके सर. तो सुब्रमण्यम के बुक में तो उन्होंने लोअर लिम्ब भी लिया, जब काटे उन्होंने किया जब. बेटा जब आप सब अलग अलग लगाओगे तो उस केस में तो आप सेमी डायमीटर लगाओगे ना बेटा. ओके ओके. तो मतलब जब यहाँ पे हम कर दो अपर लिम्ब हो जाएगा वो. वहां पे भी बेटा उन्होंने चेंज किया होगा लिम्ब. तुम दोबारा चेक करो. सर लोअर लिम्ब भी है लेकिन माइनस किया उन्होंने. सो लोअर लिम्ब के साथ अगर माइनस किया है दैट मींस दे हैव सब्ट्रैक्टेड द सेमी डायमीटर ना. अच्छा सर वो राइट. अगर उन्होंने माइनस किया है दैट मींस इंडिविजुअल करेक्शन में सेमी डायमीटर इज सब्ट्रैक्टेड. सेमी डायमीटर इज सब्ट्रैक्टेड फॉर अपर लिम्ब ना, सो दे हैव चेंज द लिम्ब. ओके सर. ओके सर. ओके ओके, ऑल राइट बेटा. here we are directly taking the upper limb value, but in Subra book it is separately calculated and lower limb values taken the opposite sign. बेटा जो हमने किया है वो क्लियर हो गया? सर आपने भी शायद बताया था कि बैक एंगल में जब -180 करते तो लिम्ब चेंज हो जाता उसके बाद. एग्जैक्टली, दैट्स राइट बेटा. इसीलिए हमने लोअर लिम्ब जो ऊपर था उसे अपर लिम्ब में चेंज किया और ये करेक्शन अपर लिम्ब की है बेटा. ठीक है सर. So number 8 is clear now? Yes sir. Very good. Next बताओ बेटा. 8 हो गया, 9 number हो गया. 7 plotting. Sir, I have doubt on question number 7 plotting. ओके, हम बेटा वापस जा रहे हैं. ओके, नंबर 7 आ गया बेटा. ये नंबर 7 में 3 साइड्स हैं. So there is a cocked head which is being formed, right? Yes sir. Okay.
ये मैं आपको बताता हूँ अभी। सो नंबर 7 देखते हैं। इसके लिए बेटा आपको कॉग्ड हैट का रेजोल्यूशन मेथड क्लियर होना चाहिए। So I'll explain you in detail how a cogged hat is formed and how a cogged hat is resolved. So hold on, I'm going back to the presentation. वापस हम ये assignment पे आएंगे after we understand the cogged hat. Okay? Okay. Okay, let's go back. Okay, please mute your mics, beta. Some mics are open. Let's go to the cogged hat. Let's now move on to the resolution of a celestial cogged hat. A celestial cogged hat means that we have taken 3 observations using celestial objects and we have obtained 3 position lines. When we plot these 3 position lines on the chart, they do not intersect at a single point and instead make a triangle. This triangle is known as a celestial cogged hat. Now, when we are resolving a celestial cogged hat, the first important point to be clear in our mind is the same one, and that is that in case the error in the 3 position lines is different, then it cannot be resolved. The foremost condition for resolution of a cogged hat is that the error in the 3 position lines should be similar, of same sign and same magnitude. If the error in all the 3 PLs is similar, then the cogged hat can be resolved. Now, for resolving the cogged hat, the first thing which we need to check is that whether the 3 bearings are contained within 180 degrees or not. Now, what does this step mean? Let me explain to you. Now, how do we find out in a particular question whether the bearings are within 180 degrees or not? We can easily understand it using a simple example. Let's assume that we have a DR position in this particular location and we have obtained 3 celestial observations. Let's assume that the first observation was taken using the red colored star. It is identified as star 1 and is having a azimuth of 050 degrees. Let's mark the azimuth in the diagram. You can see the azimuth coming up. Let's assume that the second site was taken using this blue color star, star number 2, having a azimuth of 358 degrees. So you can see the azimuth of the second star also. Let's assume the third PL was obtained using the green color star, marked as star number 3, on an azimuth of 330. We are just assuming some values to understand the concept of how to identify whether bearings are within 180 or not. Now, once you have made this simple diagram, having the DR position and having the 3 celestial bodies and their azimuth, now you try to draw a straight line passing from the DR position so that all the 3 objects should come on one side of it. I repeat again, we try drawing a straight line which is passing from the DR position in such a way so that all the 3 objects come on one side of that line. If it is possible to draw that kind of a line, the bearings are said to be within 180 degrees. If it is not possible to draw such a line, the bearings are said to be not within 180 degrees
or you can also convey the bearings are stretching outside 180 degrees. Now let's try to see in our scenario, in our example, whether we can draw the line or not. Now in this case, you can easily draw a line lying in the east-west direction, east-west orientation. You can see this maroon line coming up on the screen. Now this line is passing from the DR position, and all the three stars are on one side of that line. So since all of them are falling on one side of the line, and it is possible, these bearings are within 180 degrees. So in this particular case, the bearings lie within 180 degrees. Beta, is this clear? Any doubts coming in up to here? Clear, sir. So you can just go back to the last slide. 1 second. Okay, beta, I'll show you the last one. Here it is, beta. Okay, sir. Thank you. Done. Okay, all right. Let's move ahead. Let's see an example where bearings are outside 180. Let's now try to see an example where the bearings do not lie within 180 degrees or they are stretching outside 180 degrees. We follow exactly the same procedure. We make a small diagram, rough diagram. First we plot the DR position. You can see the DR position coming up on the screen. Then we plot the three celestial bodies and their azimuth. We have the red star, which is star number 1 at an azimuth of 050. You can see the azimuth coming up on the screen. The second star which we used in this example is the blue colored star, star number 2 on an azimuth of 178 degrees. Let's mark the azimuth of the star. And the third star which we use for this particular example is the green colored star, marked as star number 3 on an azimuth of 330 degrees. You can see the azimuth of all the three stars coming up in the diagram. Now if you try to draw a straight line passing from the DR position, it is not possible to draw a line in such a way that all these three objects, all these three stars, star 1, star 2 and star 3, they lie on one side of the line. It is not possible to do that. Whichever line you draw from the DR position, you will see some of the stars will lie on one side of it and some of the star will lie on the other side of it. So in this particular case, it is not possible to draw a straight line passing from the DR position in such a way that all the three objects come on one side of it. So that tells us the bearings in this case are not contained within 180 degrees. They stretch out of 180 degrees. They are not contained within 180 degrees. Is that clear, beta? Any doubts? No, sir. No, sir. Very good, beta. Great. Now, once we have identified whether the bearings are contained within 180 degrees or they are stretching outside 180 degrees, we can now start the procedure to resolve the cocked hat. So we are now going to see the first example in which the bearings are not contained within 180 degrees. So in our plot, first of all, we mark the DR position. There are three observations, and for this example, let us assume that all the three observations were taken using the intercept method. So you can see the first celestial body, the first star, red color star coming up on the screen. This was used to obtain our first PL. This is star number 1. Let's mark off the azimuth of star number 1. You see the azimuth coming up. Now let's assume the intercept was towards.
If the intercept is towards, then from the DR position, we go towards the star up to a distance equal to the intercept, and the point where we reach is the ITP, intercept terminal point. So you can see the ITP point coming up on the screen. The position line passes from the ITP and is perpendicular to the azimuth of the body. So we can now see the position line of the red star coming up on the screen. The first position line is plotted. Let's assume that the second star which we used was the blue star in this location. This is star number 2. Let's mark the azimuth of the star. And let's assume that in this case also the intercept was towards. So from the DR position, we go towards the star equal to a distance which is equal to the intercept obtained, and we reach up to the ITP, intercept terminal point. You can see the ITP coming up. The position line will be passing from the ITP and will be perpendicular to the azimuth of the star. So let's mark the PL. You can see the number 2 PL, the blue color PL coming up. It is passing from the ITP and it is perpendicular to the azimuth of the star. This is position line number 2. Now let's mark the third celestial body. You can see the green star coming up. Let's mark the azimuth of the star. Now this star site was also worked out using the intercept method, and let's assume the intercept was towards in this case too. So from the DR position, I go a distance equal to the intercept towards the star, and I reach up to the ITP, intercept terminal point. ITP point is marked, and the PL passes through the ITP and is perpendicular to the azimuth of the body. So we have all the 3 position lines on the screen now: red color PL, blue color PL, and the green color PL, not intersecting at a single point, but instead making a triangle. So this is a cogged hat. Now if you look carefully, the bearings of all the 3 stars are not contained within 180 degrees, because it is not possible to draw a line from the DR in such a way that all 3 of them come on one side of it. It is not possible to do that. The bearings are not contained within 180 degrees. Now how do we resolve this cogged hat? Now for resolution of the cogged hat, you see this triangle which is being formed has 3 vertices. Let's name the topmost vertex as A. Now this angle of the triangle which is being made, represented by this blue color arc, we have to bisect this angle, or we have to draw the angle bisector of this particular angle. The second vertex where the red and blue lines intersect is marked as Bravo, and the third vertex is marked as Charlie. So as mentioned earlier, we now have to draw the angle bisector. So we draw the angle bisector of angle A. You can see the dotted line. It is the angle bisector of angle A. It divides angle A into 2 equal parts. The dotted line shows the angle bisector. Now similarly, we draw the angle bisector for angle B. You can see the angle bisector for angle B also coming up. And likewise, you draw the angle bisector of angle C. You can now see the angle bisector of angle C also coming up. All these 3 angle bisectors should intersect at a single point. This is a geometry principle that all the 3 angle bisectors of a triangle intersect at a single point. And this point where the angle bisectors intersect is the fix of the ship. So you can see the fix symbol coming up. We have a circle and also signified as fix. So this is how we resolve the cogged hat when the bearings are not contained within 180 degrees. So very simple method. Sir, एक doubt है sir. Draw.
Go ahead beta, go ahead with your doubt. Sir, how will you determine, sir, the fix will be inside only? It can be outside also, no, sir? बेटा जब भी कभी bearings are not contained within 180 ये अंदर ही बनेगी, आउटसाइड वाला केस अभी दिखाऊंगा. ओके ठीक है सर. Okay, that is formed when the okay, so you mean to say two stars are opposite to each other, reciprocal directions, right? Okay, that question will never come. Number one, why it will never come is because it makes the question very very simple. आपकी जो PLs होंगी, दोनों PLs दो पैरेलल लाइंस होंगी एंड इन दोनों पैरेलल लाइंस के एग्जैक्टली मिडवे में आपकी फिक्स आ जाएगी. So that question becomes very very simple. You will never get it. और बताओ बेटा डाउट्स. बेटा एंगल्स को नहीं देखना है, तीनों स्टार्स के एजीमुथ को देखना है. वो मैं अभी बताऊंगा बेटा, अभी तो एक ही केस बताया है, अभी दूसरा केस बताएंगे. नहीं छूटा बेटा, होल्ड ऑन, अभी बताएंगे इसके बाद. सर एक वो था अपना बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास ए पे रख के कोई भी एंगल बना के फिर उसको बाइसेक्ट कर देंगे ना, राइट सर? हमें कुछ ऐसा मेजर वगैरह तो नहीं करना ना? कुछ नहीं करना बेटा, सबसे सिंपल तरीका यूज करो. आपके पास डी या 360 राउंड जो भी है उससे एंगल को मेजर करो, उसे कैलकुलेटर में टाइप करके डिवाइड बाय 2 करो. आपको जो वैल्यू मिलती है उसे उस एंगल की कोई भी आर्म से लेके एंगल बाइसेक्टर बना दो. ठीक है सर, ठीक. सर समझ नहीं आया सर, क्या बोले आप? बेटा आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर पाओगे डी या 360 डिग्री राउंड के साथ, कर लोगे? सर ये इजी है, जो आपने बताया ये तो पता है, एंगल बाइसेक्ट. राइट. और क्या समझ में नहीं आया बेटा? नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं ना वो कंपास से वो सेकंड के बोल रहे थे आप. ओ फॉरगेट अबाउट दिस बेटा. ठीक है सर, ये पता है सर. बाइसेक्ट करके ये शो करना पड़ेगा कि बाइसेक्ट किया है. लाइन तो ड्रॉ कर दे. हाँ लाइन तो ड्रॉ करोगे बेटा, जैसे यहाँ डॉटेड लाइन है, यू कैन ड्रॉ द डॉटेड लाइन. और सर जैसे ए और बी का मिड लेके उधर से जो अपोजिट सी से वो अपोजिट करते हैं और ए सी का मिड लेके फिर वो लाइन ड्रॉ मारते हैं, उस तरह भी हो जाएगा क्या सर बिना बाइसेक्ट किए? बिल्कुल नहीं होगा बेटा, वो चार्ट वर्क में यूज होता है मेथड, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यहाँ वो नहीं बन रहे हैं, यहाँ एंगल बाइसेक्टर हैं बेटा. वो मेथड यहाँ नहीं चलेगा. हाँ सर, विष्णु सर ने बोला भी था कि वो अलग करना है. टेरेस्ट्रियल, ये सेलेस्टियल है. एग्जैक्टली, वो टेरेस्ट्रियल है, ये सेलेस्टियल है, दोनों मेथड अलग अलग हैं बेटा. वो बहुत रेयरली क्वेश्चन में आता है, बहुत रेयरली आता है टेरेस्ट्रियल कॉक्ड हैट. आई थिंक पिछले 5 साल में एक सवाल आया होगा उसका, पर ये फ्रीक्वेंट है बेटा. सेलेस्टियल नेविगेशन वाला क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में आपको मिलेगा. सर इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल अजीमथ विद ऑब्सलॉन्ग हो, जैसे लॉन्ग बाय क्रॉन से निकलेगा, तो सर फिर कैसे कंपेयर करेंगे 180 है नहीं है? नो प्रॉब्लम बेटा, कोई भी मेथड हो, आपने तो स्टार्स के एजीमुथ को देखना है. मेथड कोई भी हो सकता है, डज नॉट मैटर एट ऑल. आप एक रफ डायग्राम बनाइए, डीआर पोजीशन प्लॉट करो और तीनों एजीमुथ को ड्रॉ कर दो. दैट विल टेल यू विद इन 180 और आउटसाइड 180. बट सर जो लॉन्ग बाय क्रॉन में है, हम लोग ऑब्स लॉन्ग से एजीमुथ प्लॉट करते हैं ना सर? डज नॉट मैटर बेटा, चाहे आप पीएल को ऑब्जर्व लॉन्ग से प्लॉट करो, चाहे डीआर लॉन्ग में आईटीपी से प्लॉट करो, आपके स्टार का एजीमुथ चेंज नहीं होता है. बियरिंग स्ट्रेच एजीमुथ पे डिपेंड करता है. कैसे करेंगे, मतलब वो पूछ रहा था, मतलब ज्वाइन क्या करेंगे? यहाँ पे तो डीआर पे हमने तीनों ज्वाइन कर दिए हैं. बेटा मैं बता तो रहा हूँ कि आपने एक रफ डायग्राम बनानी है, प्लॉट में नहीं देखना उसे. एक रफ डायग्राम, रफ कॉलम में डीआर पोजीशन बनाओ और अपना 360 डिग्री राउंड लेके तीनों स्टार का एजीमुथ वहां प्लॉट कर दो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा. सर इनमें से कोई एक अगर लाइक 2 इंटरसेप्ट एंड 1 पीएल बाय ऑब्जर्व लॉन्ग होती, तब कैसे करते थे? देन दैट वुड बी डीआर डी लॉन्ग एंड देन डीआर लैट एंड ऑब्जर्व लॉन्ग, नो? बेटा जो मेथड है ना आपका, देखो पहले तो विद इन 180 और आउटसाइड 180 का पता करना है. वो सिर्फ एजीमुथ पे डिपेंडेंट है,
कोई भी पीएल मेथड यूज किया हो, इट इज टू बी चेक्ड ओनली बाय द एजीमुथ ऑफ द स्टार्स। ये क्लियर हो गया? यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आपने देखा कि 3 पीएल्स थी, आप उन तीनों पीएल्स को जब प्लॉट करोगे तो जो जो मेथड दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ तीनों इंटरसेप्ट थे, हमने इंटरसेप्ट लगा दिया। अगर आपको कोई लॉन्ग बाय क्रोन देता है तो नेचुरली आप यहाँ पे लॉन्ग बाय क्रोन का ऑब्जर्व लॉन्ग भी प्लॉट करोगे और फिर वहाँ एजीमुथ के परपेंडिकुलर पीएल को ड्रॉ करोगे। यू विल ड्रॉ लाइक दैट ना? यस सर। आप बिल्कुल उसे वैसे ही ड्रॉ करो। अल्टीमेटली ये ट्राइंगल आपको दिखाई देगी अपने प्लॉट में, चाहे कोई भी मेथड हो। अगर ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है प्लॉट में तो इसे सॉल्व ऐसे ही करना है। सर वो समझ आ गया, बट दिस 180 डिग्री लाइक इट इज कंटेन्ड विद 180 डिग्री और नॉट, वो बिकॉज वी आर टेकिंग अ रेफरेंस एज dr lat एंड dr long, उसमें सर लॉन्गिट्यूड डिफरेंट होगा, तो वो कॉमन पॉइंट कैसे लेंगे, वो डिसाइड कैसे करेंगे? एजीमुथ तो सेम है। बेटा तुम समझे नहीं बेटा, मेथड कोई भी सर होने हम दो लोग बेटा। ऑब्जर्व लॉन्ग बनाने की जरूरत थोड़ी है, हम लोग तो कोई भी प्लस का साइन बना के एजीमुथ बना के देख सकते हैं ना। ओके बेटा, तुमने ना सिर्फ एजीमुथ को देखना है, मेथड को भूल जाओ। बियरिंग स्ट्रेच विद इन 180 और ग्रेटर देन 180 के लिए मेथड को देखो मत बेटा। सर एक बना दीजिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई क्वेश्चन बनानी है सर हमें। ये लो अभी बना देते हैं। तुम एक क्वेश्चन निकाल लो, अब क्या करना है। 1 मिनट में अभी व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। सर वो एक को लॉन्ग बैकग्राउंड कर देते। हाँ बोलो बेटा, बताओ मुझे। आपके पास 3 साइट हैं, राइट? स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, स्टार नंबर 3, 3 साइट हैं। बताओ मुझे नंबर 1 कौन से मेथड से लिया बेटा? एनी मेथड ऑफ योर चॉइस बोलो। सर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। सो पहली वाली साइट हमने जो है इंटरसेप्ट से ली है। एक एजीमुथ बता दो बेटा कोई भी बॉडी का। 045। 045 एजीमुथ है, वेरी गुड। ये पहली साइट आ गई हमारे पास। दूसरी साइट का मेथड, एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। लॉन्ग बाय क्रोन। लॉन्ग बाय क्रोन। लॉन्ग बाय क्रोन। एक एजीमुथ बता दो बेटा अपनी चॉइस का। 150। 150, ये एजीमुथ आ गया बेटा सेकंड साइट। थर्ड साइट कोई भी मेथड ऑफ योर चॉइस। सर पोलारिस। पोलारिस, ओके। सो पोल स्टार। एक एजीमुथ बता दो अपनी चॉइस का। 001। वेरी गुड, 001, ग्रेट बेटा। अब देखो, इसको सॉल्व अगर हमने करना है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना बियरिंग स्ट्रेच विद इन 180 है या आउटसाइड 180। उसके लिए एक सिंपल रफ डायग्राम। यहाँ पे तुमने एक डीआर पोजीशन बनाई, तीनों का एजीमुथ आपने प्लॉट करना है। एक एजीमुथ है 001, ये मैंने यहाँ पे 001 दिखा दिया, ये पोल स्टार आ गया आपका। दूसरा एजीमुथ है 045, ये 045 का एजीमुथ मैंने दिखा दिया। ये नंबर 1 साइट थी आपकी, लेट अस मार्क नंबर 1 हियर। पोलारिस वाज नंबर 3, लेट अस मार्क नंबर 3 हियर। तीसरा एजीमुथ आपने बताया था 150, ये 150 आ गया बेटा, ये है स्टार नंबर 2। मुझे बताओ बियरिंग स्ट्रेच विद इन 180 है या आउटसाइड 180? आउटसाइड। वेरी गुड। अगर मैं एक नॉर्थ साउथ लाइन खींच दूं, ये तीनों उसके एक तरफ आ रहे हैं, दिस इज विद इन 180, ओके। अब विद इन 180 को प्लॉट कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, इसमें मुझे 10 मिनट लगेंगे, ओके। सो इसका प्लॉटिंग मेथड, अब इसको भूल जाओ कि क्या है ये। अब तो आप इनको प्लॉट करोगे और प्लॉट करने पे कोई भी आपके पास ट्राइंगल बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। उसका मेथड बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंट है। उसके मेथड का विद इन 180 आउटसाइड 180 से या इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ट्राइंगल बनाएंगे प्लॉट में और उसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मैंने आउटसाइड 180 का दिखाया है, विद इन 180 का नहीं दिखाया है। अभी के लिए एक एजीमुथ चेंज कर देते हैं ना, आउटसाइड 180 कर देते हैं। हाँ कर दो चेंज। यस सर। कर दो चेंज कर दो। कौन सा करना है बताओ।
190 152 लॉन्ग बाय क्रोन चेंज कर दो सर, लॉन्ग बाय क्रोन 190 कर दो। वेरी गुड। लॉन्ग बाय क्रोन जो है ये हमने कर दिया 190। सो अब ये क्या बनेगा, लेट अस मेक इट नाउ। अब आपका जो नंबर 2 है ये आ गया यहाँ पे। ओके, ये नंबर 2 आ गया। अब हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे, ये आउटसाइड 180 चला गया। अब ये एक लाइन के एक साइड में तीनों नहीं आ रहे, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं प्लॉट पे जाऊँगा। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे DR पोजीशन बनाई, ये DR लैटिट्यूड है और ये मेरा DR लॉन्जिट्यूड है। दिस इज द DR लॉन्ग। ओके, अब मैं यहाँ ग्रीन कलर में एक और चीज़ बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ऑब्जर्व लॉन्ग। ऑब्जर्व लॉन्ग कहीं भी हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग ऑब्जर्व लॉन्ग इज हियर। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड भी बना दिया, लेट अस मार्क इट बाय OL, ऑब्जर्व लॉन्ग। ओके, और अब मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ, आई एम पिकिंग अप ए येलो कलर नाउ, और लेट्स पिक ब्लू। अब मुझे पोलारिस से मिलेगा एक ऑब्जर्व लैट विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम DR लैट। वो कहीं भी हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे है। इस पे मैंने लिख दिया ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो? यस सर। वेरी गुड। अब इनको प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। जो आपका ऑब्जर्व लैट और DR लॉन्ग है उस पे एजीमुथ है 001। अब मैं ब्लू कलर से एजीमुथ शो कर रहा हूँ और इसके साथ ही बना रहा हूँ PL। PL बनेगी ऐसे, ये पोलारिस की PL है, ब्लू कलर की PL। एग्री बेटा? पोलारिस की PL आ गई, वेरी गुड। अब चलते हैं लॉन्ग बाय क्रोन पे। लॉन्ग बाय क्रोन की जो PL है वो पास करेगी एजीमुथ 190 है, सो लेट अस मार्क द एजीमुथ। ये मैंने एजीमुथ मार्क किया 190 ग्रीन कलर में। PL will pass from DR lat and observe long and it will be perpendicular to the azimuth। ये मैंने ये लॉन्ग बाय क्रोन की PL बना दी बेटा। ये ग्रीन कलर की जो PL है ये लॉन्ग बाय क्रोन की PL आ गई। अप टू हियर क्लियर? यस वेरी गुड। अब चलते हैं इंटरसेप्ट पे। इंटरसेप्ट का जो एजीमुथ है वो है 045। इसको मैं दिखाता हूँ रेड कलर में। सो ये एजीमुथ बनेगा DR लैट और DR लॉन्ग पे। ये मैंने 045 का एजीमुथ बना दिया। इस पे इंटरसेप्ट मार्क किया, लेट अस से इंटरसेप्ट वाज 2 माइल टूवर्ड्स। सो मैंने अपने स्केल के हिसाब से यहाँ 2 माइल लिया और मेरी जो PL है विल बी पासिंग फ्रॉम द ITP परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ। ये मेरी PL बनेगी इंटरसेप्ट की बेटा। ये मेरी इंटरसेप्ट की PL आ गई। एग्री? एग्री सर। अब देखना ध्यान से बेटा, अब मैं पिक कर रहा हूँ येलो कलर और इसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं। देखो कॉक्ड हैट कहाँ बन रही है। ये रहा एक वर्टेक्स कॉक्ड हैट का, यहाँ तक। ये रहा दूसरा वर्टेक्स कॉक्ड हैट का और ये रहा तीसरा वर्टेक्स कॉक्ड हैट का। ये कॉक्ड हैट बन गई। येलो कलर की कॉक्ड हैट दिख रही है बेटा? यस सर। हमने करना क्या है, लेट अस पिक अप पिंक कलर नाउ। पिंक और एनीथिंग, लेट अस पिक अप पिंक। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एक एंगल का, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है सेकेंड एंगल का, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है थर्ड एंगल का। दिस इज द फिक्स। ये आ गई बेटा फिक्स। यस सर, ये समझ में आ गया आसन मोनेटिक। डाउट क्लियर हो गए सारे? Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, how will I find the index error from this? होल्ड ऑन बेटा, वो लास्ट में आएगा। Okay, sir. बताता अभी हूँ। लॉन्ग हमारा कुछ और था लेकिन फिक्स वाला लॉन्ग कुछ और आ गया। बेटा इस केस में मेरिडियन पैसेज ऑब्जर्वेशन तो कोई नहीं थी,
तो ऑब्जर्व लॉन्ग और फिक्स ऑब्जर्व लैटिट्यूड और फिक्स लैट भी मैच नहीं करेंगे, और लॉन्ग बाइक्रोन से तो ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड मिलता है ना, फिक्स लॉन्जिट्यूड थोड़ी मिलता है। ओके गॉट इट। ओके सर ये इंडेक्स एरर सर सिलेबस में तो नहीं है, इस पे तो क्वेश्चंस भी नहीं आते ऑलमोस्ट। यस सर, इंडेक्स एरर नहीं है शायद। बेटा अगर डाउट आ गया मैं तुम्हें फिर भी करा दूंगा, भूल जाना उसको। नहीं सर, मतलब है ठीक क्या? है सर, बट वो मतलब काफी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं है। जाता है डायग्राम सर। बहुत पहले एक सवाल आया हुआ है बेटा, अगर कभी भूले भटके वो आ गया तो मैं अभी तुम्हें 15 मिनट में करा दूंगा, उसे अब यूज करके सॉल्व ठीक है कर सर। देना अगर आ गया तो। सर ये अगर तीनों एलिमेंट बिटवीन 180 आता है तो प्लॉट इनसाइड द कॉफ्टैट आता है कि आउटसाइड द मैंने कॉफ्टैट? अभी बताना है बेटा, मैं डिटेल में बताऊंगा विद इन 180 कैसे करना है। वंस यू आर क्लियर आई विल गो बैक टू विद इन 180। ओके सर। ओके सर। सर ये जो फिक्स निकाल रहे हैं, ये आपने एंगल बाइसेक्ट करके निकाला है ना सर, दोनों दो यस एंगल के बेटा, बीच का डिवाइड करके डिवाइड। ओके दैट्स राइट तो बेटा, दीज आर एक्चुअली एंगल हम बाइसेक्टर्स। मास्टर में तो जो जैसे सिखाया है मुझे वो है कि मतलब उसको टूवर्ड्स या अवे निकाल के उसका जो दो वर्टेक्सेस जो है, जो बाहर वाला ट्रायंगल और अंदर वाला ट्रायंगल, वो वर्टेक्सेस ज्वाइन करके जो कॉमन पॉइंट आता है वो भी फिक्स है, वो मेथड भी यूज कर सकता हूँ बेटा ना? आई जस्ट फॉरगेट अबाउट एनी अदर मेथड, ओके सर। just forget, use this method, you will get your answer. ओके ओके सर। सो सर Okay दिस बेटा, एंगल बाइसेक्ट जो कर रहे हैं, ये मतलब आप ट्रैक्टर से एंगल निकाल के इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना सर? सिंपलेस्ट पॉसिबल वे बेटा, आप आपके D और 360 डिग्री राउंड से ये एंगल मेजर करो, लेट अस से दिस कम्स टू 30 डिग्रीज, कैलकुलेटर में इसे डिवाइड बाय 2 करो, आपको 15 डिग्री वैल्यू मिलेगी, 15 डिग्री की वैल्यू। वो 15 डिग्री का एंगल इस साइड से बनाना है यहाँ से बना दो, इस साइड से बनाना है यहाँ से बना दो, कहीं से भी बना दो, एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, यूज दिस टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। सो और वन मोर थिंग, लास्ट डाउट, आप क्या बोलो। सजेस्ट करते हैं सर, इसको ग्राफ पेपर में बनाएं कि स्केल वाइज नॉर्मल पेपर में बनाएं, क्योंकि ग्राफ पेपर में कई बार बहुत ज्यादा क्लटरिंग हो जाता है। बेटा अगर whatever you are comfortable and convenient is convenient to you, आप दोनों में किसी पे भी बना सकते हो। ग्राफ पेपर की एडवांटेज ये है कि वहाँ आपको पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएंगी। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो क्लटरिंग होगी वहाँ पे, एंड सेकेंडली उसका साइज लिमिटेड है, आंसर शीट बड़ी है। सो दोनों में से जो भी Yes. आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे बना दो। आई वुड रिकमेंड प्रैक्टिस ऑन प्लेन पेपर बिकॉज समटाइम MMD may not provide you with graph paper. Yes. Okay, sir, understood. बेटा तुम्हें अगर आर्क मार के बाइसेक्टर बनाना इजी लगता है बना सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं एंगल बाइसेक्टर बनाने के, बट ये देख लेना कि कहीं उसके चक्कर में तुम्हारा प्लॉट कंजस्टेड ना हो जाए। ओके अगर वो कंफर्टेबल लगता है मेथड, गो अहेड, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। बट बेटा चेक कर लेना कि वो मेथड एक्यूरेट है। मैंने तुम्हें सिंपलेस्ट मेथड बताया, मैं और मेथड नहीं बताऊंगा अब यहाँ पे, आई वोंट कंफ्यूज यू एट ऑल। बेटा मुझे दूसरा ऑप्शन तो कराने दो तो अभी अभी बनेगा बाहर, रुको पहले इसमें डाउट बताओ जो दिख रहा है स्क्रीन पे, देन आई विल गो देयर ना। वेरी गुड, अब जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे सर बंद ये कर जो दो। एग्जांपल आपने दिया है, तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज आउटसाइड 180 डिग्री, azimuth outside 180, no sir? या azimuth, the stars are stretching outside 180 बेटा। Or the fix is coming within the triangle? Fix is coming within the triangle. Okay. ठीक है सर, मैं आगे का एग्जांपल देखता हूँ। हाँ तो अगर इसमें क्लियर हो बेटा, एवरीबडी कंफर्टेबल, शैल आई क्लोज दिस आउट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लोजिंग दिस। अब हम जा रहे हैं ऑप्शन 2 पे।
Let's now move on to the second scenario where the bearings are contained within 180 degrees. Let me show you an example. Let's assume that we have the DR position at this particular location. You can see the DR latitude and longitude coming up on the screen. Let's assume that this was the first star which we used for our site. This is star number 1. The site was worked using intercept and we obtained the intercept towards this body. So let's mark the azimuth of this star. You see the azimuth coming up. The intercept is towards, so from the DR position we go towards the body a distance equal to the intercept, and the point where we reach is the ITP, intercept terminal point. We know that the position line will pass from the ITP and it will be perpendicular to the azimuth of the body. So you can see the first position line coming up on the screen. The red position line is there in our plot. Let's assume the second star which we used for our site was this blue color star, star number 2. And in this case, the intercept which was obtained was away. So let's first mark the azimuth of the star. You see the azimuth coming up. The intercept is away. So from the DR position, we move away from the body a distance equal to the intercept and we reach at the ITP. Once the ITP is there, we can now plot the second PL. You can see the blue color position line number 2 coming up in our plot. Let's assume the third site which we had taken is by using this green color star, star number 3, again worked out with intercept, and the intercept is towards in this case also. So from the DR position we go towards the body a distance equal to the magnitude of the intercept. We reach at the ITP, intercept terminal point. Passing from the ITP is our PL and it is perpendicular to the azimuth. So we have all the 3 position lines now in our plot. Red, blue and green position lines. And these position lines are not intersecting at a single point, but instead making a cocked hat, making a triangle. And we have the cocked hat now in our plot. Now you can easily see in this diagram that the bearing is contained within 180 degree. The bearing stretch of the 3 stars is contained within 180 degrees. How can we check that? Very easy to do. The method was to draw a line from the DR position in such a way that all the 3 celestial bodies fall on one side of that line. And here we can see that if we draw a line in the east-west orientation, passing from the DR position, a line in the east-west orientation, then all these 3 stars, red star, star number 1, blue star, star number 2, and green star, star number 3, will fall on one side of that line. And when that happens, it means that the bearings are contained within 180 degrees. So in this case, the bearings are contained within 180 degrees. Now, whenever we have such a scenario where the bearings are contained within 180 degrees, we will always be able to identify one particular star which lies in between the other 2 stars. Like in this example, we see the red color star, the blue star, and the green star. Now, if you look at the stretch of the bearings, you will be able to understand that the red color star is at one extremity, at one end of the stretch. The green color star is at another end of the stretch, and this blue color star lies in between star number 1 and star number 3. This star is known as the middle star. So I repeat once again, whenever the bearings are contained within 180 degrees, you will be able to identify one particular star which lies
in between the other two stars. In this case, in this example which we have taken, the blue color star lies in between the red star and the green color star. So the blue color star is our middle star. Now once the middle star is identified, the next thing which we do is to identify the position line associated with the middle star. So we can see the position line number 2, the blue color position line, is the one which is associated with our middle star. This PL, the blue color PL, position line number 2, is specified as the middle PL, middle position line. Now, once we have identified the middle PL, in our case the blue color PL, you will see that this middle PL is involved in making two angles of the triangle. Let us name the vertices of the triangle. This vertex, let's name it as A. The second vertex where the red and blue lines intersect, let's name that as B, Bravo. And the third vertex where blue and green lines intersect, let's name that as Charlie. So we have the three vertices of the triangle, Alpha, Bravo and Charlie. Now you will be able to see that our middle PL, that is the blue color PL, is involved in making two vertices or two angles of the triangle. These angles are angle Bravo and angle Charlie. Angle Alpha is not associated with our middle PL in any way. Angle Bravo and angle Charlie have the middle PL as one of their arms. So we have to identify the two angles which are connected with our middle position line. In our case, angle Bravo and angle Charlie are connected with the middle PL, which is the blue color PL. Now for these two angles which we have identified, Bravo and Charlie, we have to draw the external angle bisectors. Now what do we mean by external angle bisectors? Let me show you in the diagram. We have identified the middle star, the blue color star, and its associated PL, the blue PL. We have identified the angles which are involved with the middle PL, in our case angle Bravo and angle Charlie. And now we are going to draw the external angle bisectors for these angles. Now this angle which you see in the diagram now, which has come up in the diagram, this is known as the external angle Bravo. It is outside the triangle and it is called as external angle Bravo. Now in the case where the bearing stretch was greater than 180 degrees, we drew the internal angle bisector. You see, this was the internal angle and we had drawn the angle bisector of the internal angle which lies inside the triangle. But now in this case, we are going to draw the angle bisector of the external angle bisector. So let's draw the angle bisector now. You see the dotted line coming up as the external angle bisector. This is going to divide this angle into two equal parts. So we have the external angle bisector for angle Bravo in our plot. Now we do the same thing with angle Charlie, angle C. We draw the external angle C. You see the external angle Charlie coming up in the plot. And we draw the angle bisector for this external angle. So you can see the external angle bisector coming up. This also divides angle Charlie, external angle Charlie, into two equal parts. So we have drawn two angle bisectors for Bravo and Charlie. Now for the third vertex, that is Alpha, we draw the internal angle bisector as usual. So let's draw the internal angle bisector A.
you have the internal angle coming up in the plot, and we now draw its internal angle bisector. You see the dotted line internal angle bisector of A coming up, and you will see that all these three angle bisectors will intersect at a single point. Now, this is also a geometry principle. The external angle bisectors of two angles and the internal angle bisector of the third will also intersect at a single point, and this point is our fix in this particular case. So you see the circle coming up, that is the symbol of the fix, and you see it written as the fix in the plot. So this is how we resolve the cocked hat when the bearings are contained within 180 degrees. Important thing to see here is that the fix in this case will always be outside the triangle or outside the cocked hat. In the case, first scenario where the bearings were not contained within 180, the fix was inside the triangle or inside the cocked hat. But in this particular case, where the bearings are contained within 180 degrees, the fix of the ship will be outside the cocked hat or outside the triangle, and it will always be towards the direction of the middle position line. Our middle position line was the blue PL. So you will see the fix will always be on the side outside the triangle towards the side of the middle PL, middle position line. So now tell me your doubts in this, beta. So it is necessary to bisect internal of angle of A, sir. हाँ बेटा, वैसे तो उसने उसी पॉइंट पे जाके मीट करना है, बट यू शो ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स. Okay. ओके, ये पोजीशन बाहर क्यों आती है बेटा? अब बेटा इसके लिए ना बहुत गहरे पानी में जाना पड़ेगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू. I can explain it to you, but then not required. Sir, in case, for example, the middle star is B, then the internal angle will be the B and A and C will be the external angle. Is that correct, sir? You are saying middle star is Bravo. Bravo तो बेटा vertex है triangle का. No, sir. In case, sir, in case if all the three azimuth are lie towards that B side. I'm just telling, for example, the middle star always have to take that internal angle, correct, sir? नहीं बेटा, नहीं, इससे confusion हो जाएगा. You just remember बेटा, सबसे पहले middle star को identify करना है. इस केस में blue star is the middle star. अब अगर मैं green को उठा के उसकी opposite direction में लगा दूं तो red middle बन जाएगा. Yes, sir, that understood, sir. But I am asking, sir, in case that position, that azimuth lies the right side, all the three. Okay, I'll take you to the whiteboard, बेटा. मैं वहाँ पे समझाऊंगा. I don't want to answer yes or no to you. It can create confusion. Okay, sir. So if the bearings Okay. are if Go the ahead. bearings are contained within 180 degrees, the will fly outside the triangle, cocked hat. Yes, that's right. And if the bearings are contained outside 180 degrees, the fix will lie within the cocked hat. That's right. सर इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना सर, कि वो पीएल किधर जा रहा है, वे टुवर्ड्स करके भी फिक्स बेटा, बाहर किधर बनेगा. I would not recommend. This is the simplest possible method. आप इसे इसी मेथड से करो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. बट सर ये जो स्टार है, 3 स्टार है, तो वो हमेशा एक स्टार बीच में आएगा ही आएगा. लेस देन 180 में हमेशा एक स्टार बीच में आएगा ही आएगा. ओके सर. क्लियर है बेटा? सेटिस्फाइड? Yes, sir, satisfied. Yes, sir. Excellent, sir. Very good. Excellent. Great.
सर वन मोर थिंग, हमारे क्लास में सर दिस लेक्चर्स वाज सेइंग कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एजिमुथ एंड थर्ड एजिमुथ, वैसे भी ले सकते हैं क्या सर? वो लोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट कौन सा है और थर्ड कौन सा है वो पता नहीं चलेगा। तुम ट्राई करके देख लो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ You will never come to know which is first and which is third. ओके ओके Okay. सर ये 180 के विद इन रहेंगे तो आउटसाइड बनेगा हमेशा फिक्स That's right. ट्रायंगल के। बिल्कुल exactly बेटा, that's right. ओके सर। Okay, all right. अब मैं white board पे जा रहा हूँ। Karthik had some doubt, so let's try to do that on the whiteboard. हाँ बताओ बेटा, अब यहाँ पे तुम बोलो मुझे कि कैसे लेना चाहते हो 3 स्टार्स को। 3 एजीमुथ अपनी चॉइस के कोई भी दे सकते हो। सर वन इज 45, 90 एंड 120. Okay. So one is 45, other is 90, third is 120. Yes sir. Okay. So I would suggest using the previous example. So जब वो within और outside वाला किया था ना सर। Just a minute बेटा, उसमें let me second first solve this doubt. बेटा let me solve this doubt with, मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ। Just a minute. बेटा ये मैंने ना कॉक्ड हैट बना दी तीनों स्टार्स के साथ। ये हमारी कॉक्ड हैट बन गई है। अब इसमें जो मिडिल स्टार है वो है स्टार नंबर 2, राइट बेटा? दिस इज द मिडिल स्टार। Yes sir. मिडिल पीएल जो इसके परपेंडिकुलर है वो है ये रेड कलर पीएल, दिस इज द मिडिल पीएल। Yes sir. मिडिल पीएल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक बनेगा ये वाला बेटा ऐसे, और दूसरा बनेगा ये वाला ऐसे, एंड जो ये एंगल बन रहा है कॉक्ड हैट का, इसका नॉर्मल बाइसेक्टर ये बनेगा ऐसे। दिस इज हाउ इट विल गो। Okay sir, understood. Understood. वेरी गुड, ग्रेट। हाँ अब बताओ बेटा और क्या डाउट था? सर इंस्टेड ऑफ अगर 120 अगर हम लोग उसको 310 या 320 ले लें तो कैसे बनेगा वो बता देंगे? ओके अभी बता देते हैं बेटा। ये लो हमने चेंज करने हैं ये एजीमुथ। बताओ बेटा कौन से एजीमुथ लेना चाहते हो? सर सेम सर 10, 90 एंड 310। ओके 010, जी सर। let us say number 1, 090, this is number 2, and 310, 310, number 3। वेरी गुड बेटा। इसकी कॉक्ड हैट भी बना देता हूँ। ओके सो नंबर 3 की पीएल जो है विल बी परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ, दिस विल बी नंबर 3 पीएल। नंबर 1 की जो पीएल है इट विल अगेन बी परपेंडिकुलर टू नंबर 1's एजीमुथ, एंड जो नंबर 2 स्टार है इसकी जो पीएल है बेटा, लेट अस एक्सटेंड दिस। जो नंबर 2 स्टार है 090 के एजीमुथ पे है, इसकी पीएल विल बी परपेंडिकुलर टू 090, सो समथिंग लाइक दिस। ओके ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई है। लेट मी शो यू द कॉक्ड हैट नाउ। ओके एक पीएल है ये वाली बेटा, दिस इज द पीएल। सेकेंड पीएल है दिस वन। थर्ड पीएल थी हमारी वो है ये बनी है बेटा कॉक्ड हैट। अब कैन यू आइडेंटिफाई द ब्लू कलर कॉक्ड हैट? यस सर। ओके अब इसमें मुझे बताओ मिडिल स्टार कौन सा है, 1, 2 या 3? मिडिल वाला सर 1। वेरी गुड, मिडिल स्टार इज 1। अब मिडिल स्टार के साथ जो पीएल है वो कौन सी है? ये वाली पीएल है बेटा। दिस वाज व्हाट वाज परपेंडिकुलर टू नंबर 1, राइट? यस सर। इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स बनेंगे वो एक ये एंगल बनेगा, दूसरा ये एंगल बनेगा। सो बाइसेक्टर विल गो लाइक दिस एंड लाइक दिस,
एंड थर्ड वर्टेक्स का सिंपल एंगल बाइसेक्टर लाइक दिस इज हाउ इट विल गो. ये होगी फिक्स. ठीक है सर. और सर अगर इसमें अगर हमें आइडेंटिफाई करना है दैट सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए तो अगर हम लोग इसमें ईस्ट वेस्ट वाले में करेंगे तो एक स्टार्ट तो एग्जैक्टली लाइन पे ही आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नो प्रॉब्लम. आप चाहो तो एक लाइन पे भी ले सकते हो. अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा घुमा दो बेटा. 091 कर दो ना. 091 एंड 271 कर दो. कंफ्यूजन क्लियर. ठीक है सर. सर ट्रायंगल अगर इनसाइड वाले केस में सर ट्रायंगल अगर छोटा है तो बाइसेक्टर फिर कैसे, अगर ट्रायंगल छोटा बन रहा है सर? बेटा अब अगर ट्रायंगल, इसको मैं क्लोज कर दूं बेटा. यस सर. ओके. अब अगर आपका ट्रायंगल बहुत ही छोटा बन रहा है तो बेटा एक बार तो चेक कर लो कि कहीं तुमने स्केल बहुत छोटा तो नहीं ले लिया. एक बार चेक कर लो उसे, क्योंकि अगर कोई भी कॉग्ड हैट का क्वेश्चन को दे तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें सब्सटेंशियल ट्रायंगल बने और आप एंगल बाइसेक्टर बना सको. अब ट्रायंगल ही इतना छोटा बने कि उसमें एंगल बाइसेक्टर बन ही नहीं रहे तो फिर देयर इज सम इशू. एक बार चेक कर लो कि स्केल ओके है. अगर स्केल ओके है और फिर भी आप देख रहे हो कि ट्रायंगल छोटा बन रहा है, इतना छोटा है कि डी से एंगल मैयर ही नहीं हो रहा है. अगर मैयर हो रहे हैं फिर तो बाइसेक्टर भी बन जाएंगे, बट एंगल मैयर ही नहीं हो रहा है, इतना छोटा बन रहा है. तो फिर सिर्फ एक चीज़ चेक करो कि बियरिंग स्ट्रेच विद इन 180 है या आउटसाइड 180. अगर आउटसाइड 180 है तो इतने छोटे ट्रायंगल के अंदर एक डॉट लगा दो. कहीं पर भी लगाओगे द ट्रायंगल इज सो स्मॉल, राइट? वही मैं स्टार्टिंग में पूछा था कि एक डॉट लगा दो बाइसेक्ट के अलावा, तब भी तो अप्रॉक्सी आएगा, मतलब इतना माइनर नहीं रहता है. Only if the triangle is so small that you cannot measure the angles. सर अगर हम मेजर नहीं कर सकते तो एग्जामिनर कैसे कर लेगा? Exactly बेटा, that's right. Okay. अब इंडेक्स एरर बता दूं बेटा, चलें इंडेक्स एरर पे. अगर आउटसाइड में छोटा ट्रायंगल बना तो फिर बेटा आपको मिडल पीएल आइडेंटिफाई करनी है और मिडल पीएल से उसे बाहर ले जाना है. थोड़ा सा बाहर ले जाओ, दैट्स ऑल. ओके सर. ओके, क्योंकि उस केस में एग्जामिनर एक ही चीज चेक कर पाएगा कि आपने उसे ट्रायंगल के अंदर बनाया है या बाहर. इफ इट इज सो स्मॉल ए ट्रायंगल यू कैनॉट मेजर द एंगल्स. दिस इज द ओनली थिंग ही इज गोइंग टू चेक. सर ये एंगल बाइसेक्ट करते करते सर दूसरा कॉक्टेट बन जाए तो क्या करना है सर? अब अगर बीच में दूसरा कॉग्ड हैट बन गया बेटा तो अगर टाइम है तो उसे रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि यू हैव मेड वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स रॉन्ग. और अगर टाइम नहीं है तो फिर उनको मिला दो एक पॉइंट पे बेटा, और क्या कर सकते हो? हाँ सर, ये मिला देंगे. हाथ से पकड़ के वैल्यू ऑफ एरर जो हाथ से पकड़ के मिला दो. एरर का जो है उसका गुंजाइश कितना होगा? जो एरर जो है आंसर, उसमें मार्क्स कटने में कितना फर्क पड़ता है, मतलब पॉइंट कितना डिफरेंस होगा तो एक्सेप्टेबल? बेटा ऐसा कुछ तो नहीं है दैट वी हैव ए सर्टेन एक्सेप्टेबल वैल्यू, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्केल यू हैव टेकन. So don't bother about the matching of your answers, accuracy. You just ensure that the plot is correct. Okay. Okay. अब बेटा प्लॉट ही चेक करना है उसने भी. Okay, the value is going little bit up and down. क्वेश्चन में लिख देना, आंसर शीट में लिख देना, अच्छी नजर हो देखे. तो अब अंकित ने डाल दिया बेटा, चेक कर ले, उसके साथ मैच कर ले. स्केल को 4 ले लो ना, 4 बेटा, माइल्स ले लो, 1 सेंटीमीटर बेटा 4 माइल्स. अगर कोई बियरिंग 120 की है और तुमने वो 130 की लगा दी है तो प्लॉट देखने से थोड़ी पता चलेगा कि तुमने 130 लगा दी है. वहां दोबारा से अब बेटा गलती तो वहीं होगी ना कहीं, तो तू चेक कर सारे के सारे एंगल्स पीएल की डायरेक्शन
और उनकी लेंथ को चेक करो बेटा, निकल आएगी गलती। सर एक क्वेश्चन और सॉल्व करोगे सर? सर इस पे एक क्वेश्चन सर। बेटा पीयूष बेटा, बाकी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तू चेक कर ले उसे दोबारा। अब मैं नहीं चेक करके बता सकता तुझे बेटा तेरा प्लॉट। क्यों सर? सर एक क्वेश्चन और सॉल्व करोगे सर विद इन 180 पे? बेटा मैंने मेथड बता दिया, जो एग्जांपल मैंने दे रखी है वो विद इन 180 की है, उसे सॉल्व करो, आप मैच करो। ब्रेक ठीक है लेते सर। हैं। असाइनमेंट की एग्जांपल विद इन 180 की है, आप उसको मैच करो वर्किंग के साथ। ओके सर एक क्वेश्चन था सर, जो हम लोग एंगल बाइसेक्ट करेंगे आउटसाइड का, वो दोनों पीएल के बीच में लेंगे ना? आउटसाइड एंगल बाइसेक्ट जब करेंगे सर, राइट तो राइट। दोनों पीएल के बीच का एंगल लेंगे ना, बाहर वाले का? हाँ बेटा, दोनों पीएल के बीच का ही एंगल लोगे। ठीक है सर। डोंट वरी, अगर आपको कंफ्यूजन हो गया और आपने गलत एंगल बाइसेक्ट कर दिया ना, तो वो एंगल बाइसेक्टर कहीं मिलेंगे ही नहीं बेटा, दे विल नॉट मीट। तो आपको पता चल जाएगा कहीं गड़बड़ है, आप सही वाला एंगल बाइसेक्टर बना ही लोगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। ओके। तो ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 13। अभी तो इसमें बेटा वो इंडेक्स एरर भी तो था, सो अच्छा, वो अच्छा। कवर कर लें, और यू वांट टू गो फॉर ब्रेक? सर 10 मिनट का ब्रेक दो सर। सर कर ही आपके लेते हैं बारी सर, खत्म हो जाएगा सर। नो सर करके जाते हैं सब, करके जाते हैं, करके करते करके हैं। जाते सर ब्रेक के बाद इंडेक्स खत्म कर करेंगे दीजिए सर, सर, इंडेक्स करके जाते हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, ले लो तुम ब्रेक ले लो, मैं ब्रेक के बाद फिर दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी, टेक योर ब्रेक। अपनी थोड़ी अल्लेज रखना अब ऊपर, सो देन वी विल डू द इंडेक्स एरर। लेट्स मीट बैक आफ्टर 10 minutes. ओके सर। ओके।